Good morning, class. Today I'm here to discuss about the poem The Duck and the Kangaroo. In the last classes, I shared the story of packing, and now in the same unit 7 we have poem also. So here today I will explain about the poem. This is humorous poem of a kind known as nonsense verse. मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई वो नहीं है, एक ऐसी बातचीत है जो आपको रियल में कहीं देखने को नहीं मिलेगी. So it is very easy to understand that kind of poem. So first of all, I'm going to read. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hope over the fields and the water too. As if you never would stop, my life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. This is the first stanza of the poem. Now the second and third. Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we would go to the D and the Jelly Boli, over the land and over the sea. Please take me a ride or do, said the duck to the kangaroo. Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. In the fourth stanza, said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks, which fit my web feet neatly. And to keep out of the cold, I have bought a clock. And every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady. And quite at the end of my tail, so away they went with a hope and a bound, and they hoped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. Actually, it is a story, and basically, you must have understood the whole poem through the reading. But still, I am going to explain the summary of this poem, and even I am sharing with you the summary. So, this is the conversation of this. Let me explain. Okay, duck the duck and the kangaroo summary deals with the story that covers the conversation. Actually ये conversation है जिसमें ये बात कर रहे हैं आपस में between duck and kangaroo. And further it is in the story duck seems impressed the kangaroo's abilities and praises of the kangaroo for it. Moreover praises the reason for this is because the kangaroo can hop and visit various places. वो तारीफ कर रही है डक जो है कंगारू की, उसको लग रहा है कि भाई ये जो है उछल कूद लेता है तो बड़ा मतलब एक्साइटिंग है, और वो खुद कहती है कि ऑन द अदर हैंड द डक फाइंड इट सेल्फ बोरिंग एज इट हैज़ टू स्टे इन द पॉन्ड फॉर एवर. उसको तो हमेशा पॉन्ड में रहना पड़ता है, तो इट इज़ गेटिंग बोर ओवर देयर, ओके शी कैन नॉट गो एनी वेयर. तो डक जो है वो उससे एक रिक्वेस्ट करती है, रिक्वेस्ट ऑन द बैक ऑफ द कंगारू सो कैन सेट प्लेसेस लाइक डी एंड जेली बॉयली. तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि जैसे डी एंड जेली बॉयली ने विज़िट किया था तो उसको भी जाना है उसकी टेल पे बैठ करके, बैक पे बैठ के. तो इस रिक्वेस्ट पे कंगारू सेज कि इट वुड रिक्वायर सम टाइम टू थिंक दैट एज द डक इज़ अ वेट एंड मे गिव बॉडी पेन. तो वही वो कहते हो तुम तो हमेशा भीगी रहती हो तो इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए. इवेंचुअली कंगारू एग्रीज, बट फिर भी ही एग्रीड फॉर दैट कि चलो मैं तुम्हें एक राइड करा देता हूँ. और फाइनली वो उसकी बीट पर बैठ जाते हैं और वो भी तैयार हो जाता है. तो अब क्या होता है कि द डक इज़ ऑल स्ट्रक विद इम्प्रेसिव एबिलिटीज़ ऑफ द कंगारू. तो उसमें अगेन यहाँ पर भी यही शुरू हो रहा है कि उसके अंदर कुछ वो देखती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है
कि मुझे जो है तुम वहाँ पर लेकर चलो। फाइनली वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ तक जो है वो शुरू हो जाता है और फाइनली वो जाते हैं। द डक सेड इट इज़ अ सॉल्यूशन। तो जब वो कहता है कि तुम तो हमेशा गीली रहती हो, पानी में निकल रही हो, तो फिर मैं कैसे लेके जाऊँगा। तो इन दिस पेज द डक सेड दैट कि इट हैड अ सॉल्यूशन एज इट thought over it by sitting on the rocks during the day. To avoid that, the duck bought 4 pairs of worsted socks. तो उसको लगता है कि भाई मेरे पैर हमेशा गीले रहते हैं। वो उसको बोल देता है कि तुम्हारे जो पैर हैं वो हमेशा गीले रहते हैं, तो ऐसे कैसे हो पाएगा। वो सॉक्स लेकर आती हैं। Furthermore, these worsted socks fitted its web and shaped feet. अब उस पैरों पे वो आ भी जाते हैं फिट। Moreover, for the other purpose of staying, the duck would cigar every day and wear a shrug. और फिर वो चेंज भी करेगी, श्रग भी पहन लेगी, जो भी क्लॉथ्स हैं उसके। Most noteworthy, the duck would undertake all these measures in order to ensure the protection of its beloved kangaroo. तो जो कंगारू उसको बोल रहा है वो सब करने को रेडी है, बट एक्चुअली शी वांटेड टू गो, शी वांटेड टू राइड। सो एक सेटिस्फेक्शन था ये फ्रॉम द कंगारू विद द रिस्पॉन्स ऑफ द डक। कॉन्सिक्वेंटली इट गेव अ कंसेंट टू गिव अ राइट ऑफ द डक। एक्चुअली तो वो बोल चुका था, बट वो इधर उधर की बातें कर रहा है कि ये तुम्हारे पैर हैं, वो हैं। और जब रात हो जाती है तो देयर वॉज अ पेल लाइट ऑफ द मून। अब सिर्फ चांद की रोशनी दिख रही है। फाइनली कंगारू एंड द डक बिगन देयर ट्रिप विद अ हॉप। और वो फिर अपने ट्रिप शुरू कर देते हैं। द कंगारू टोल्ड डक टू होल्ड इट फॉर्मली ड्यूरिंग द ट्रैवल। और वो बोलता है उसको कि आप मुझे अच्छे से पकड़ के बैठे रहना। एंड मोर ओवर डक एंड कंगारू ट्रैवल टुगेदर अराउंड द वर्ल्ड। और वो पूरी दुनिया घूम लेते हैं। वर्ड्स मोर दे ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड 3 times। ऊपर से 3 बार घूम लिया उन्होंने। फर्दर मोर बोथ ऑफ देम वर हैप्पी इन ईच अदर्स कंपनी। और दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे की कंपनी में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। थैंक यू।